MSQ can be made from this dynamic balancing of mass in a single plane. Suppose there is a mass in a single plane. Suppose there is a single mass in a single plane, then how can we balance that mass? Case 1, we can balance that mass by placing a mass diametrically opposite to it in the same plane. Suppose this is the unbalancing mass. So if you want to balance this mass, you place a diametrically opposite, this is the same plane, a mass here. So you place a mass diametrically opposite to it. तो इसकी फोर्स कितनी है, अनबैलेंसिंग फोर्स m1r1 ओमेगा स्क्वायर. तो इसकी होगी, इसको समझ लो mb मान लो, mb इज इक्वल टू mb rb ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा ओमेगा कटा मतलब m1r1 इज इक्वल टू mb rb. एट rb डिस्टेंस हम इसे रखेंगे. सो दिस इज हाउ वी बैलेंस दिस. सपोज एक बैलेंसिंग ऐसे इस तरह, मतलब कोई भी ऐसे एक ऐसा प्लेन था जिस पे अनबैलेंसिंग इस तरफ है, सो डायमेट्रिकली अपोजिट टू इट. सो ये फोर्स है m1r1 ओमेगा स्क्वायर, तो ये होगी mb rb ओमेगा स्क्वायर. ये इन दिस केस डायनेमिक बैलेंसिंग, इन दिस केस ऑफ डायनेमिक बैलेंसिंग मोमेंट एट एवरी पॉइंट इज बैलेंस, क्योंकि जब हम इसे बैलेंसिंग मास लगा देंगे तो इसका मोमेंट यहाँ पे होगा ये, इसका मोमेंट यहाँ पे होगा ये, दोनों एक दूसरे कैंसिल. इसका मोमेंट यहाँ पे ये, इसका मोमेंट यहाँ पे ये, कैंसिल एक दूसरे को नहीं, क्योंकि फोर्स सेम है, फोर्स इनटू डिस्टेंस भी सेम है, बस फोर्स बैलेंसिंग करनी है. सो ओनली फोर्स बैलेंसिंग करनी है. तो इस केस 1 जहाँ पे हम सिंगल मास को बैलेंस करते हैं सिंगल प्लेन पे, उसे कभी कभी स्टैटिक बैलेंसिंग कर बोल देते हैं, क्योंकि स्टैटिक बैलेंसिंग में हम सिर्फ फोर्स बैलेंस करते हैं, क्योंकि इसमें मोमेंट, क्योंकि सिंगल प्लेन में बैलेंसिंग हो रही है तो मोमेंट तो अपने आप ही बैलेंस्ड है, तो फोर्स बैलेंसिंग ही करते हैं हम लोग. m1r1 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू m2r2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू m1r1 इज इक्वल टू m2r2. सिंगल मास को अगर सिंगल मास से बैलेंस करना है, सो मास को डायमेट्रिकली अपोजिट होना पड़ेगा सिंगल प्लेन में. जैसे ये वाला केस, ये वाला केस में बैलेंसिंग नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे ये तो बैलेंसिंग हो जाएगी किसी भी तरीके से, पर हॉरिजॉन्टल बैलेंसिंग भी नहीं हो पाएगी. ये सिंगल प्लेन है, मतलब दिस इज द प्लेन, ये इस तरह का प्लेन जिसके अंदर ये मासेस रखे हुए. इस तरह के केस में भी बैलेंसिंग हो जाएगी, वर्टिकल बैलेंसिंग हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल बैलेंसिंग हो जाएगी. ये एक दूसरे को ऐसे अरेंज करेंगे कि बैलेंसिंग हो जाएगी. सो अगर सिंगल मास को सिंगल मास से बैलेंस करना है, सो डायमीटर के अपोजिट. अगर सिंगल मास से नहीं बैलेंस करना है, तो सेम प्लेन में सिंगल मास से बैलेंस नहीं करना है, तो ये कन्फिगरेशन भी पॉसिबल है. देखो आई एम रीडिंग आउट दिस टॉपिक, क्योंकि ये ऐसी 2021 में से एक सवाल था. What we are actually doing by balancing chapter, we are trying to shift the eccentricity to the center of the axis of the rotation. ये अनबैलेंस मास था, ये बैलेंसिंग मास है. जब इन दोनों का ये पूरी केस स्टडी अभी सिर्फ सिंगल मास के लिए है, और बैलेंसिंग में भी सिंगल प्लेन का है. तो इसका सेंटर ऑफ मास है इधर, इसका सेंटर ऑफ मास है इधर, तो नेट सेंटर ऑफ मास होना चाहिए सेंटर ऑफ एक्सिस पर. सो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होगा, y बार इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2 इंटू r2 अपन m1 प्लस m2. क्योंकि हम डिस्टेंस मेजर यहाँ से कर रहे हैं, तो r2 होगा नेगेटिव. यही था ये इसी में सवाल. यहाँ पे होगा y r1 पॉजिटिव, यहाँ r2 होगा नेगेटिव. सो y बिकम 0, यानी नेट सेंटर ऑफ मास हैज कोइंसाइडेड विद द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी बैलेंसिंग हैज अचीव्ड, अनबैलेंसिंग हैज अचीव्ड. ये सब हम केस स्टडी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 0 रख दो, तो यहाँ पे आएगा m1r is equal to m2r2, which is normal true. Of course it's normal true. So what we are actually doing from this, of course what we are actually doing from this, nothing, just nothing we are doing from this. Now why do we approach, why don't we do balancing of single mass in a single plane? Because it is impractical. We can do like this or we can do like this, but this is impractical case, because actually it is not a mass, it should be a disk, but we have taken it as a center of mass, represented as center of mass. So on a single point you cannot place two disks. Placing disk on a same plane is quite impractical. That's why we do the second case, balancing of a single mass
in different planes. MCQ: single mass can never be balanced by a single mass in different plane, no matter what, because you can balance the force but couple won't be balanced. So we are dealing, so this is the case one. This is suppose this is the unbalanced force and you are trying to balance, this B is the balancing. So of course you can do some, like force can be balanced, of course MB RB omega square is equal to M1 R1 omega square, you can do like that. But these are the bearings, there will be a net moment at the bearings, and if there is a net moment at the bearings, if there is any effect on the bearing, then that system is not balanced. Case 2, this is not achievable, not practical. This also cases, definitely this cases you want to go here. Couple can be balanced but force cannot. Force cannot be balanced, but couple, this इसका couple इस तरफ, इसका couple इसका इस तरफ, इसका couple इस तरफ, इसका तरफ, इसका couple नहीं, couple भी balance नहीं हो सकते. So this is a very impractical case. So अगर एक single mass को different planes में अगर balance करना है तो दो masses की ज़रूरत पड़ेगी. अब एक और स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूँ. So suppose you have to balance a single mass in different planes, so you need at least two masses and at least two different planes. And at least two different planes. I will explain you why I stated this statement. Suppose this is the case one. Pink represents the balancing masses. In this case, of course, you can do like force balancing. Suppose if you want do couple balancing. Suppose both these masses are same. Iska couple idhar. So actually, what we are doing net force should be 0 and net moment at any point should be 0. So we are arbitrarily choosing the point as A. Suppose this is the configuration and these are the masses. Pink represent balancing masses. So forces can be balanced. But suppose take a moment at A. Moment cannot be balanced in this configuration. In this configuration, force can be balanced. Moment can also be balanced. So don't check at every point. This is the perfect configuration. Net force, this, net moment at A, this. Now the third configuration, force can be balanced but moment cannot be balanced. So this is impractical case. This case, force can be balanced, moment can also be balanced. So this is also a practical case. These are the things. What we have written here, force into distance is equal to force into distance. This I was stating, you need at least two different planes. Force can be balanced, of course force can be balanced, but moment cannot be balanced, because of course you will say that you will take the masses as same. In that case moment can be balanced, but in that case force won't be balanced if you take these two masses as same, because if masses are same, this will cancel each other, this will remains the net unbalanced resultant force. If you take different, then as the distance is same, couple won't be balanced here. So this is also a practical case. So possible cases are this and this case. So you, to balance a single mass in different planes, you need at least two masses, and I am not saying different masses can be same. So reframing the statement, to balance a single mass you need at least two different planes, two masses. One more MCQ statement. Static balancing does not ensure dynamic balancing, but dynamic balancing ensures static balancing. Static balancing means force balancing. Dynamic balancing means force plus couple balancing.
So if a system is dynamically balanced, then it is statically balanced also. But if it only statically balanced, it does not mean it will be dynamically balanced. This is an MCQ statement, no relevance to anything.